23 Asiatic lions have died in the last 1 month in the state after death of 2 more lions last night, apparently from a viral disease. Gujarat government has now shifted about 30 more lions to a rescue center in Somnath district. Expert veterinary doctors and virology scientists from Pune have reached Gujarat to ensure that other lions can be saved. The Asiatic lion of Gir is facing a tough challenge in Gujarat. It appears that canine distemper virus has taken the life of some of the lions that have died mysteriously in the last 1 month. According to forest experts, the disease spreads to lions when they eat cats or dogs which are affected by the deadly virus. ये सिर्फ एक ही एरिया में मौत हुई है। हमने पूरा गिर फॉरेस्ट और गिर के बाहर जहाँ-जहाँ भी लायन गए हैं उस एरिया को स्क्रीन कर लिया है और वो स्क्रीनिंग के दौरान हमें किसी और जगह पे कहीं भी ऐसी मौत की घटना या ऐसे सिम्टम्स देखने को नहीं मिले हैं। ये जो एडजॉइनिंग एरिया है सेमर्डी करके उस विस्तार से भी 31 लायंस को हमने रेस्क्यू करके आइसोलेशन में रखा है। उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके हेल्थ चेकअप कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि कहीं और एरिया में ऐसे सिम्टम्स ना मिले। These deaths are reported from Dalkhania range of forests in the Gir East division, spread in Amreli district. Swinging into action, Gujarat government has now moved about 30 other lions in this affected forest range to a safer place. Jasapar Rescue Centre at Gir in Somnath district. Experts have been called from Pune, Bareilly, Etawah and Delhi to give immunization to these lions to prevent any further deaths. Gujarat government is also importing a special vaccine from the US to deal with the emergency. किस प्रकार से ये मृत्यु हुआ, ये वायरस है कि क्या है और किस प्रकार से वायरस हुआ, ये सब जांच अभी चल रही है। पुणे की भारत सरकार की लेबोरेटरी में भी सैंपल भेजे गए हैं, उनका भी पहला रिपोर्ट आया है, दूसरा रिपोर्ट भी अब हम वेटिंग कर रहे हैं और भारत सरकार और गुजरात सरकार सब साथ में मिलके किसी भी प्रकार की सिंहों का मृत्यु अकारण न हो, उसकी उम्र कम हो और मृत्यु न हो, इसके लिए बहुत हम चिंता कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। Last month, between September 12th and 19th, a series of about 11 deaths were reported from Dalkhania range in Amreli. Initially, it was felt that the deaths are due to some infighting, but later on, after some post-mortems of the dead lions, it was established that canine distemper virus was the main cause of the deaths. Between 20th and 30th September, 10 more rescued lions died during the treatment. Gujarat had a total of 523 lions in the last census, of which 80 lived in the affected Dalkhania range. Dharmendra Tiwari's report, DD News, Ahmedabad.